स्टूडियो से सबसे पहले करेंगे साउंड चेक 1 2 3 1 2 3 ज्वाइन करेंगे क्लास. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. मेरा वॉइस तो नहीं आ रहा है. Let's go! I need time to deal, the pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the Let's ask to join. ये देखते हैं भैया ज्वाइनिंग मिलती है कि नहीं मिलती. ऐसा ही है भाई, यही है. भाई क्या है, 3 3 है क्या? कितनी क्लासेस करवाई है भाई? 3 3 तो लिंक भेज रखे हैं. हो गया भाई 3 लिंक. डीएनडी लगा देता हूँ. डीएनडी वेयर इज डीएनडी? डू नॉट डिस्टर्ब ब्रो. देखते हैं कैसे क्लास देता है भाई. क्लास तो एकदम डिजास्टर था. डिजास्टर. चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई तो मैं अपना रोल नंबर पासवर्ड दूंगा. कल दूसरा लिंक भी आया था यार. क्या बात है भाई, 1 घंटे क्लास मिस हो गई.
Okay, so we have taken enough time to wait for the students. Please be prepared and let us start with the class. Okay, so in your class, there are basically various modules which contains information like the prepositional logic, the Turing test, the definition of artificial intelligence. Then there are some knowledge representation which can be done by first order predicate logic and inference rules, and some systems are there in order to get the imprecise or incomplete knowledge. Then there are various languages to deal with those languages, like to deal with those problems, like Lisp and Prolog is there. And in the last, you have some intelligent agents with you and the expert system to understand. There is one question which is asked again and again in your examination, which is what is artificial intelligence, and how do you define a Turing test, and how it is different from a Chinese test, okay, Chinese room test. So today we are going to understand what is Chinese room test, what is Turing test, and what is artificial intelligence. Okay, so we will be very precise with AI, but we will be giving more focus on Turing test and Chinese room test. All right, so there are various definitions given by various scientists. So we will go through one by one, and I am sharing my screen. Okay, so you can also have a glimpse of it, and you can also understand. Okay, so we will be reading definition one by one, and then we will see what is the Turing test and Chinese room test. All right, so the first definition here uh, are given by uh, the scientists are very simple. ठीक है, they are the experts opinion basically, where they told that the AI is a study of making computer smart. AI is a study of making computer models human intelligent, and finally AI is a study of concerned with building machines that simulate human behavior. So साउंड ही धीमा कर रखा था चलो. कैसा let आवाज us आएगा? understand what is AI first. AI क्या है? AI is a technique जहाँ पे or it is a study which is required to make your system smart, make your machine smart. It uh, it must be almost like uh, आईफोन ना करो बाकी विंडोज having ऑन कर दो. same भाई इससे साउंड intelligence चला जाएगा. as any human being carries. ठीक है, ओके okay? और आपका मशीन वही बिहेवियर को फॉलो करे जो एक इंसान करता है. ठीक है, बहुत छोटे छोटे एआई के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप कोई भी रोबोट देखते हैं जो कि एक सामान को दूसरी जगह पे रखता है. दोज आर वैक्यूम रोबोट्स. सो for doing repetitive work, we have a manual labor who keep the thing from one place to another place. But when you are making same intelligence, when you are developing same intelligence into the uh, machine, in that case your machine is simulated with the behavior as like human. All right, so we can say that machine has a capability to adapt the artificial intelligence. All ह्यूमन right, बिहेवियर. so the first definition is the it
artificial intelligence is a study of how to make computer do things at a moment people are better. ऑल राइट, तो सबसे पहली डेफिनेशन बहुत ही अर्ली आई थी, बहुत जल्दी जल्दी मैं डेफिनेशन आपको लेके जाऊंगी बिकॉज दे आर आस्क्ड लाइक वेरी लेस बट दे आर समटाइम्स आस्क्ड. सो हाँ, AI is ओके a ओके. study of how to make computer do things at which at a moment people are better. So in the initial days, like in 1960s, 70s, the first scientist, who was Elaine Rich, he came up with the thought that there must be some machine who work as like human being, just like if I can count 2 into 2, right? So 2 into 2 is a 4. Okay, so machine can adapt As with well, my intelligence as and well. can calculate 3 by 3 or 4 by 4 or 5 by 5 or as per requirement. Okay, so जितना भी लोग स्मार्ट हैं उसी उसी तरीके से मशीन भी स्मार्ट हो, राइट? तो वो मशीन क्या कर सके, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर सके, मतलब जैसे कैलकुलेशन नॉर्मल, उसके अलावा वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके और वो सभी टास्क कर सके जो कि रेपिटेटिव हो. ठीक है, तो इट विल बी गुड. ठीक, बट फिर क्या हुआ कि देयर वाज अगेन अनदर पर्सन हु केम. हिज नेम वाज बुचेनन शॉर्टलिफ. ठीक है, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, एआई इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद सिंबॉलिक rather than numeric processing, and non-algorithmic methods include the rule of thumb or heuristic instead of algorithms or technique for solving problem. तो इन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे मेथड्स जो कि नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं, और ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है जो मैनुअल वर्क है, ठीक है, जो हाथ से करा जा सकता है. ठीक, मतलब उसके लिए जब आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, कोई सिस्टमैटिक मेथड नहीं है, बट यू डू इट लाइक क्रॉसिंग द रोड. ठीक है, उसके लिए कोई सिस्टमैटिक मेथड नहीं है, आप बिल्कुल नहीं नापते हैं कि गाड़ी आधे किलोमीटर दूर है कि 30 मीटर दूर है कि क्या है. आप एक एस्टिमेट लेते हैं, यू जस्ट क्रॉस द रोड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक. ठीक है, एक एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम स्पेसिफिक होती है. स्पेसिफिक का मतलब कि आपको पता होता है कि अच्छा 30 मीटर कार की डिस्टेंस है एंड आई हैव टू क्रॉस ओनली आफ्टर the car has reached to the 30 meter and then only I can cross. ठीक है, तो वो होता है. ठीक, अब क्या हुआ, ये तो हो ही गया, ठीक है, सही है. ठीक, तो डिफरेंस जो है ह्यूरिस्टिक में और नॉन एल्गोरिथमिक और एल्गोरिथमिक में यही है कि एल्गोरिथम्स में यू हैव स्पेसिफिक प्रोसीजर्स. ठीक है, स्पेसिफिक आपको पता होता है. ह्यूरिस्टिक में यू गेस. ठीक है, आप गेस करके अपना काम करते हैं. तो यहाँ पे व्हाट द साइंटिस्ट वांट्स टू से कि AI is a branch of computer science that deals with symbolic rather than numeric processing. मतलब कि वो एक सिंबल पे वर्क करेगा rather than numeric processing पे, और जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो गट बेस्ड होंगे इंस्टेड ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. तो प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि व्हेन एवरीथिंग इज गट बेस्ड, व्हेन everybody has different intelligence, everybody takes decision as per their capability, ठीक है, as per their understanding. So what happens here, that whenever you have your own understanding, in that case your decision is going to be different from the other person. So for each person the problem solving will be different. All right, तो उन्होंने दिस पर्सन टेल्स कि हर इंसान के लिए कोई भी प्रॉब्लम है वो अलग तरीके से रिजॉल्व होगी. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर के साथ इसको अलाइन करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है. तो इसलिए जो प्रोसीजर्स हैं उनको स्टैंडर्ड ना रख के उनको ह्यूरिस्टिक्स रखा जाए, सो दैट
optimal solution can be gained. All right. फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट डेफिनेशन जो आई वो थी AI is a study of techniques for solving exponentially hard problems in polynomial time, exploiting knowledge about the problem domain. ठीक है, तो AI क्या है? AI is a study of technique for प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक स्टडी ऑफ टेक्निक है. एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होने में दिक्कत होती हैं उनको ये रिजॉल्व करता है. अब ये क्या है भाई, पॉलिनोमियल टाइम में कैसे रिजॉल्व करे जाते हैं किसी प्रॉब्लम्स को? आपने पढ़ा होगा, जब आप एल्गोरिदम्स की क्लास की होगी तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि कुछ सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशन जो एक पॉलिनोमियल टाइम में 2 to the power n टाइम में रिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, दोज आर नॉट दोज आर लाइक सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स. ठीक है, बट दोज who cannot be solved in polynomial time, those are hard problems. ठीक है, hard problems का मतलब कि उसमें कोई ना कोई heuristic हो रही है, your computational time is very high. तो एलन रिच ने कहा कि चूंकि अब हम सारे डायमेंशंस ले रहे हैं, ठीक है, अब अपने सारे डायमेंशंस जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं हम वो ले रहे हैं, तो इस वजह से ये चीज हो सकती है कि जो टफ प्रॉब्लम्स हैं, जो नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम एआई को यूज करके सॉल्व कर लें. ठीक, फिर क्या हुआ? फिर एक और डेफिनेशन आई कि अच्छा ठीक है, हम वो सॉल्व तो कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हुई? स्टार्टिंग सिर्फ इससे शुरू हुई कि हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेटर चीज करनी है. लेकिन जब हम थोड़ा आगे गए तो पता चला नहीं नहीं, इट कैन डू अ लॉट बेटर. ठीक है, और भी चीजें हैं जो ये कवर करता है. तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस concerned with designing intelligent computer systems that exhibit the characteristics we associate with intelligence in human behavior. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एआई कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है जहाँ पे कि हम कोशिश करते हैं कि हम एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाएं, सिस्टम दैट एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक we associate with intelligence in human behavior. तो अब अभी तक हम betterment की बात कर रहे थे कि a system that can be better than that can work better like human being. ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उन सिस्टम्स में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को एसोसिएट कर सकते हैं जिसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन बिहेवियर के इक्विवेलेंट हो. ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर के इक्विवेलेंट हो, वो ऐसे ही वर्क करे जैसे कि आपका ह्यूमन करता हो और उसके अंदर इंटेलिजेंस भी हो. वो इंटेलिजेंस जो कि ऐसे डिसीजंस लेने में हेल्प करे जो आपके ऑलरेडी ह्यूमंस लेते हैं. ठीक है, उस तरह से वो वर्क करना शुरू कर दे. ऑलराइट, सो what happened in the next definition? यहाँ पे क्या हुआ? Perhaps broadest definition is that AI is a field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational process. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि yes, whatever has been said is okay, but in my opinion, AI is a field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational process. मतलब कि अगर कोई भी computation को हम एक as a feature लेते हैं तो उसको हमारा सिस्टम बहुत ही आसानी से कर सकता है. ठीक है, वो कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस को हम ये कह सकते हैं कि वो जो अपना इंटेलिजेंट बिहेवियर है उसको
कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस के थ्रू डिफाइन कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। उसी में अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल डीप हियर, बिकॉज इसी के बाद फिर थोड़ा सा रिसर्च में स्ट्रेंथ आई। उन्होंने कहा कि हम जो कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस कर रहे हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है मशीन का। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा, लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस डू सम टेस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। According to the above definition, AI is partly scientific in nature because it seeks to explain the phenomena of intelligence. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भी फेनोमेना है आपका इंटेलिजेंस का, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पार्टली इंजीनियरिंग बिकॉज इट सीक्स टू इमुलेट intelligent behavior through computational process, that is by generating representation and development of programs that automatically solve problems so far solved by only human being. तो जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक ह्यूमन बीइंग के द्वारा निकाली गई हुई है, ठीक है, जो भी रिजॉल्व करी गई है, वो सेम प्रॉब्लम जो है वो मशीन सॉल्व करे, ठीक है, by generating the representation and the development of programs. In a view of fact that AI is partly an engineering discipline, according to the above definition, let us recall what is meant by concept engineering. ठीक है, ये समझ लेते हैं कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। Engineering may be thought as the application of science and mathematics by which properties of matter and sources of energy in nature are made useful to the man structure, machines, product, system and processes. तो साइंस और मैथ्स का यूज़ करके कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करके जो भी अवेलेबल है नियर बाय यू, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चर्स, मशीन, प्रोडक्ट, सिस्टम एंड प्रोसेसेस. Again, in the light of definition of engineering given above, a part of the definition by Shelkoff may be paraphrased as: through application of AI, products are obtained that exhibit intelligent behavior. This paraphrased part of the definition by Shelkoff raises another issue: how to judge, evaluate whether a product obtained through an application of AI is actually intelligent. Okay, तो हमें basically we he tell that he told that how to judge, evaluate whether a product obtained through an application of AI is intelligent. The issue of testing an AI product as intelligent product was considered by the pioneers themselves, including Alan Turing, the most well-known name among the pioneers. ठीक है, in the honor of Turing, the most prestigious award for the contribution to the field of computer science have been instituted and is given annually. Turing suggested a test which is well known as Turing test for testing whether a product has intelligence. An outline of the Turing test is given below. तो इस चीज़ को हमें रिजॉल्व करने के लिए हम क्या क्या एलन ट्यूरिंग ने ही परफॉर्म्ड ए ट्यूरिंग टेस्ट. अब ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कम्स इन एवरी एग्जाम. For the purpose of the test, there were 3 rooms. In one of the rooms is the computer system claimed to have an embedded इंटेलिजेंस. ठीक है, तो 3 रूम हैं जिनमें से किसी एक में एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जो बहुत इंटेलिजेंट है, सिमिलर लाइक ह्यूमन बीइंग. उसका बिहेवियर, उसका थिंकिंग कैपेबिलिटी, कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी, इट इज सिमिलर टू लाइक अ ह्यूमन बीइंग. In the other 2 rooms, 2 persons are sitting, one in each room. बाकी दोनों रूम में क्या है कि human beings are sitting. तो there are 3 rooms, out of which one there is one computer is there. ठीक है, कंप्यूटर है एक में और बाकी दोनों में ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, द रोल ऑफ वन ऑफ द पर्सन, लेट अस कॉल ए, इज टू पुट क्वेश्चंस टू द कंप्यूटर and to the person to be called B without knowing to whom a particular question is being directed, and of course with the specific person of identifying the
computer. On the other hand, computer would answer in such a way that its identity is not revealed to A. मतलब कि तीन लोग हैं, तीनों अलग अलग रूम में हैं, जिनमें से दो ह्यूमंस हैं और एक आपका कंप्यूटर है. एक ह्यूमन क्या करेगा? ही विल थ्रो अ क्वेश्चन. ठीक है. he will the role of one of the person, let us call A, is to put questions to the computer. ठीक है. तो A का काम होगा कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछना, एंड टू द अदर क्वेश्चंस टू बी कॉल्ड B. तो B से भी वो क्वेश्चन पूछेगा विदाउट नोइंग टू whom a particular क्वेश्चन इज बीइंग डायरेक्टर. मतलब कि उन दोनों रूम्स में वो क्वेश्चन पूछेगा और उसको पता नहीं होगा कि कौन से वाले में ह्यूमन है और कौन से वाले में सिस्टम है. ठीक है. And of course with a specific purpose of identifying the computer. On the other hand, computer would answer in such a way that its identity is not revealed to A. तो जब भी A क्वेश्चन पूछेगा, B and computer has to answer, but A को ऐसे pretend करना है कि सॉरी ए नहीं, कंप्यूटर को ऐसे प्रिटेंड करना है एज इफ ही इज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर इज वेरी स्मार्ट, नोज एवरीथिंग. ह्यूमंस कैन बी कंफ्यूज समटाइम्स एंड मे टेक सम टाइम टू थिंक एंड गिव द आंसर. ठीक है ना. तो इसलिए कंप्यूटर हैव टू बी दैट क्लेवर कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करे, क्योंकि जितनी जल्दी वो आंसर दे देगा उतनी जल्दी ही ए को समझ में आ जाएगा कि this one is computer and this one is human being. ठीक है. The communication among the three is only through computer terminals, so that identity of the computer or the person B can be known only on the basis of quality of responses as intelligent or otherwise. ठीक है. तो the communication, जो communication है वो among the three is only through computer terminals. computer terminals को ही इस्तेमाल करके तीनों का कम्युनिकेशन हो रहा है. So the identity of the computer or the person B can be known only on the basis of quality of responses as intelligent or otherwise, and not just on the basis of other human or machine characteristic. तो क्या हो रहा है, जो कम्युनिकेशन है इनके बीच का वो मशीन्स के कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू हो रहा है, ताकि आप बाकी कैरेक्टरिस्टिक से ये ना समझ पाए कि कंप्यूटर है या ह्यूमन है. If A is not able to know the identity of the computer, then computer is intelligent. अगर A को समझ नहीं आता है कि the machine is intelligent, in that case the computer is working fine as is intelligent. More appropriately, if the computer is able to conceal its identity from A, then computer is intelligent. तो अगर A को पता नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर आपका इंटेलिजेंट है. ठीक है. तो ज़्यादा सही वही होगा कि कंप्यूटर अपनी एबिलिटी को हाइड कर ले. We may note here that in order to be called intelligent, computer should be clever enough not to give answer too quickly. All right, at least not within a fraction of a second, even if it can say to the question involving finding of product of two numbers each of more than 20 digits. ठीक है. तो कंप्यूटर को हम इंटेलिजेंट तभी कहेंगे जब वो क्लेवर इनफ हो not to answer too quickly. ठीक है. Just like I told that it should adapt with the human behavior, so that it will be more appropriate to say कि uh, uh, it should be clever enough to not to give answer too quickly, and at least not within a fraction of second, even if it can say. अगर उसको आ भी रहा है तो भी वो ना बोले. and just like अगर आप जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के ले देते हैं जो कि मोर देन 20 डिजिट्स हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अ कंप्यूटर टू गिव द आंसर इन अ वेरी सेकेंड. बट कंप्यूटर शुड बी इंटेलिजेंट एनफ to conceal its identity by not telling the answer for like few minutes, so that the human or the person can be confused whether the computer is there or a human. uh, in that case only we can say that the computer is intelligent. all right. तो क्या हुआ कि ये टेस्ट जो था
ये टेस्ट परफॉर्म, who performed this test? He was Alan Turing. He performed this test, and he tried to understand कि इस तरह के सेटअप में क्या मशीन का बिहेवियर ए को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाउ इंटेलिजेंट इज द मशीन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ वेल ट्रेन द मशीन इज। ठीक है, तो इस तरीके से इन दिस सेटअप ट्यूरिंग परफॉर्म्ड हिज टेस्ट। ऑल राइट, बट देर वर ऑब्जेक्शंस टू दिस टेस्ट, कुछ ऑब्जेक्शंस थे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट आपका ट्यूरिंग टेस्ट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका चाइनीज रूम टेस्ट है, बिकॉज दे आर आस्क्ड इन कोहेरेंस विद ईच अदर। ऑल राइट, सो ट्यूरिंग टेस्ट में क्या हुआ कि आपके पास 3 रूम है, एक रूम में ह्यूमन है, सॉरी एक रूम में कंप्यूटर है, बाकी 2 रूम में ह्यूमंस है। इंटरनेट जो आपका कंप्यूटर है वो टर्मिनली कनेक्टेड है, मतलब ओवरऑल सब नेटवर्क पे ही कनेक्टेड है ह्यूमन से। ठीक है, ए बी एंड कंप्यूटर। ठीक है, ए का काम क्या है, आइडेंटिफाई करना कि बी इज ह्यूमन और कंप्यूटर इज ह्यूमन। ठीक है, दोनों में से मशीन कौन है, ह्यूमन कौन है। अगर आपका कंप्यूटर अपने बिहेवियर को लेकर अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर ले गया, दैट मीन्स योर कंप्यूटर इज स्मार्ट, ही नीड्स टू अलाइन हिज बिहेवियर just like a human being, and if A is unable to understand, then in that case your computer is intelligent। ठीक है, इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि if the computer knows some answers he give it very quickly, because that is not a human behavior, human takes time। तो being smart is one thing, but being intelligent is different here, so you try to make the connect। all right, तो अभी let us move ahead and see what are the objections of Turing test. There have been a number of objections to the Turing test, as the test of intelligence is of a machine. Okay, so because we are testing the intelligence of the machine, so there were uh, many objections. All right, so one of the objections were proposed by John Searle, and this objection was called as Chinese room test. Okay, the essence of the Chinese room test that we are about to explain below is convincingly successfully by system say A of possessing qualities of another system। ठीक है, अब समझिएगा कि सपोज सिस्टम ए, ठीक है, एक सिस्टम ए है, उसकी वो सारी क्वालिटी पोजेस कर लेगा सिस्टम बी का। ठीक है, दैट डज नॉट इम्प्लाई, होल्ड ऑन, ओके सॉरी। ऑलराइट, सो okay, sorry, let's get back to the Chinese room test। So हम कहाँ पे थे कि we are going to explain below is that
convincing successfully by system से तो suppose ए है ए इज सम सिस्टम जो कि बी की सारी क्वालिटीज को पोजेस कर लेता है से बी डज नॉट इम्प्लाई दैट अ सिस्टम ए एक्चुअली पोजेसेस द quality of B. For example, a capability of convincing others by male human being of being a female does not give the male the quality of bearing child like a woman. Okay, so even if you are going to have uh, the even if you are going to have some features, but your actual quality cannot be completely possessed into other system. Take the scenario for Chinese room test consists of single room with two windows. ठीक तो ये देखिए this is important. The scenario of Chinese room test consists of single room with two windows. एक room है जिसमें दो window है. In the room, a scholar on Shakespeare knowing English but not knowing Chinese. ठीक है तो एक रूम है जिसमें कि एक स्कॉलर है जिसको इंग्लिश आती है पर उसको चाइनीज नहीं आती is sitting with a sort of encyclopedia on Shakespeare. ठीक है और वो एक encyclopedia लेके बैठा हुआ है which carries all the information of Shakespeare. The encyclopedia is printed in such a way that each pair of facing pages, one page is written in Chinese character and other page is translation of English of the contents of facing page in the चाइनीज ठीक है तो एक जगह पे आपका इंग्लिश है एंड द अदर कन्वर्जन इज चाइनीज थ्रू वन ऑफ द विंडोज क्वेश्चंस ऑन शेक्सपियर लिटरेचर इन चाइनीज कैरेक्टर्स आर सेंट to the person sitting inside. The person look through the encyclopedia and on finding the encyclopedia, the exact copy of sequence of characters sent in, reads its translation in English, thinks of its answer. ठीक है तो वो क्या कर रहा है जब भी उस पर चाइनीज में क्वेश्चन थ्रो हो रहे हैं वो अपने ट्रांसलेटर में चाइनीज डाल रहा है ही गेट्स इंग्लिश conversion and writes an answer in English for his own understanding, finds a corresponding sequence of Chinese characters in the encyclopedia and send the sequence of Chinese character through other window. Now, Cyril says that though the scholar not successfully behave as he or she knows Chinese, but as per the assumption, it is not so. Just for the fact that a system is able to simulate a quality, it cannot be inferred that the system possess the same quality. So what he wants to say that if a system is going to copy or behave like another system, it does not mean that it possesses the same quality. It may be pretending to have those quality, but we cannot say that the system is able to simulate the quality, and we cannot say that the system possesses that quality. ठीक है तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि चाइनीज रूम से जो इन्फरेंस हमने लिया इस इन्फरेंस के अकॉर्डिंग यही चीज थी if somebody if one system wants to behave like uh, another system ठीक है it can behave but it is not going to be his characteristics, it is not going to be his intelligence. All right, once the feature is going to be away from that system, the system will be non-meaningful. Okay, so that was the thing which was inferred from Chinese room test. All right, so these two tests are very important. I hope you all understood it. Do you have any questions that you want to ask in these two during test in Chinese room test? Is there anything that you want to ask? Ma'am, I want to ask one thing. Huh. Ma'am, in the Chinese room test, ma'am, it is the objection objection being put by the another person. It was an objection, ma'am. It is also a test. It is also no. He
he told that a person behaves like another person is not going to make him or make him equally intelligent as the other person. मतलब अगर आप ये कहें कि मैं आपकी तरह pretend कर लूं तो मैं आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले लूंगी, ठीक है, Okay, ma'am. मैं Okay. सिर्फ आपकी तरह प्रिटेंड कर पाऊंगी, ये उसका ऑब्जेक्शन था, और Okay. जिसको कि उसने प्रूव किया यूजिंग चाइनीज रूम टेस्ट, ठीक है. Okay, ma'am. ही Okay. गेव एग्जांपल ऑफ चाइनीज रूम टेस्ट कि अगर आप कोई क्वालिटी पोजेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी अपनी क्वालिटी है, दैट इज यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग, यू आर जस्ट making a fake Showing. environment, हाँ, Yes, making a ma'am. fake environment. Okay. और once that particular thing is going to be, that knowledge base is going to be away from you, you will be nothing. ऑल राइट. जैसे मान लीजिए आपके पास किताब है, ठीक है, तो अब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, पढ़ाई बेहतर है, और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आराम से बिना किताब के साथ भी अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और विद बुक यू इट विल बी इजी फॉर यू. लेकिन अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो आपको हमेशा उस बुक को खोल के देखना पड़ेगा कि अच्छा व्हाट इज देयर. तो Yes, इट इज ma'am. सिमिलर लाइक दैट, ठीक है. Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, ऑल राइट, ठीक है. सो आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो एंड यू वांट टू डिस्कस? Is there anything that you want to discuss? All right. So, what shall I do? Shall I move to other topic? Okay, let us. There is one more topic which I can give you a glimpse of. Wait. Okay, so here you will see that in the second part, which is mostly asked in your exam, is propositional logic. ठीक है, what are propositional logic, होते क्या हैं, उनको लिखते कैसे हैं, what are the formulas, how to find tautology, validity, inconsistency, ठीक है, equivalent forms कैसे निकालेंगे, नॉर्मल फॉर्म्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, एंड हाउ टू डिड्यूस इट लॉजिकली, ठीक. so these kind of questions are asked in your examinations again and again. Having a proper understanding of these will help you to resolve the problems. All right, so what is proposition and what is predicate, it is very important to understand. All right, so shall I start with this propositional logic? Are you shall I start? Say yes or no or whatever. Okay, Shakir is saying yes. Okay, all right, so let us start with your propositional logic. So, symbolic logic may be taught as a formal language for representing facts about objects' relationships between objects of a problem domain, along with a precise inferencing mechanism for reasoning and deduction. All right, an inferencing mechanism derives the knowledge which is not explicitly directly available in the knowledge base but can be logically inferred from what is given in the knowledge base. So यहाँ पे there are certain knowledge base, ठीक है, कुछ facts होंगे आपके पास, उन facts को derive करके whatever the conclusion you can take out is your can be inferred and can be helped to get some solution, ठीक है. तो उन facts, दो facts को जोड़ के आप कोई एक solution निकाल सकते हो infer करके, ठीक है.
The reason why the subject matter of study is called symbolic language is that symbols are used to denote facts about objects of the domain and relationship between objects. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, we use symbols in order to develop the relation between the objects. Then the symbolic representation and not the original facts and relationship are manipulated in order to make conclusions to solve problem. तो conclusion conclusive करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम symbolic representation को use करते हैं instead of using the original facts and relational relationships in order to make it more simpler. Also, we mentioned that symbolic logic, apart from having other characteristics, is a formal language. As a formal language, there must be clearly stated unambiguous rules for defining various constituents or constructs with alphabet sets, word, phrases, sentences, etc. of the language, and also for associating meaning to each of these constituents. ठीक है, तो क्या होता है कि अब इस किसी भी सिंबल के बीच में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए whenever we are talking about any word, phrase, alphabet, or sentences. So that is the reason we are using symbolic logic. The study of symbolic logic is significant, especially for academic pursuits, in view of the fact that it is not descriptive but it is or normative. ठीक है, इसका मतलब है कि सिंबॉलिक लॉजिक हम सिर्फ इसलिए ही नहीं इस्तेमाल करते कि ये रीज़न देता है ह्यूमन बीइंग को रीज़न करने का, बल्कि इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इट टेल्स हाउ द ह्यूमन बीइंग शुड रीज़न, क्यों, किस तरीके से आपको अपनी रीजनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना है और इन्फर करना है. ठीक है. In this unit, we shall first study the simplest form of symbolic logic with the propositional logic. In the next unit, we consider a more general form of logic, which is first order predicate logic. तो सबसे पहले आप समझिए कि propositional logic क्या है. ठीक है. Then we will go to first order predicate logic. Subsequently, we shall consider other symbolic systems such as fuzzy system and non-monotonic system like expert system. ठीक है. उसके बाद these are complicated system which we will be studying later on. In the propositional logic, we are interested in declarative sentences that can be either true or false, but not both. ठीक है. तो propositional logic में कुछ ऐसे declarative sentences होते हैं जो या तो सही होते हैं या तो गलत होते हैं. मतलब they are very clear. Clear का मतलब कि you know whether it is true or whether it is false. That's all. The proposition the sun rises in the west is false. ठीक है. तो आपको पता है this is a universal fact that the sun rises in the east. ठीक है. तो here it is written the sun rises in the west, which is false. The next one is sugar is sweet. ठीक है. Sugar is sweet, which is true. ठीक है. Of course, sugar is sweet, we all know. The truth of the proposition Ram has a PhD degree depends on Ram is actually PhD or not. ठीक है. तो ये वाला फैक्ट जो है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट, इट इज पर्सन ओरिएंटेड. सो whosoever the person is Ram, it will be depending on him whether he possesses degree or not. Though at present it may be not known whether the statement is true or false, yet it is sure that the sentence is either true or false, but not both true or false. मतलब कि for any person, if for any x, if I say that X possesses a degree of PhD, then in that case the answer will be either yes or no. All right, there will be no between. There will be no answer which is going to be like very unclear answer. Like it could be true also or it could be false also. So such statements, those who can be inferred, like they can be true or they can be false. In that case, we can say that the sentence is propositional statement and can be come with either true or false. Okay, for a given declarative sentence, it is being true or false is called as truth value. Thus the truth value of 1 above is false and truth value of 2 is true. On the other hand, none of the following sentences can be assigned a truth value and hence none of these is a statement of proposition. ठीक है. तो अब why these are not proposition, let us understand. Who was the first Prime Minister of India?
So we cannot say like true or false. So in that case, this is, what is this? This is not a declarative sentence. So we can say that this is not a propositional sentence. Please give me that book. ठीक है? तो the answer cannot be in true or false. So that means this is also not a propositional sentence. Ram must exercise regularly. This is also true. Hooray, we have won the trophy. That is also true. In propositional logic, as mentioned earlier, also symbols are used to denote propositions. For instance, we may denote the proposition discussed above as follows. ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि इनको एक सिंबल दे देते हैं, जो भी हमारे प्रपोजिशनल सेंटेंसेस अभी तक हमने फिगर आउट किए थे उनको हम एक सिंबल दे देते हैं. अभी तक जो हम सिंबॉलिक कंपिटिशन्स की बात कर रहे थे वो यही है कि दीज आर द सिंबल्स दैट वी हैव टेकन. द सन राइजेस इन द वेस्ट. ठीक है, तो इस सेंटेंस को वी हैव गिवन अ सिंबल विच इज पी. शुगर इज स्वीट विच इज क्यू एंड राम हैज अ PhD degree which is R. The symbols such as P, Q, R that are used to denote propositions are called as atomic formulas or atom. As discussed earlier, in this case the truth value of P is false and the truth value of Q is true, and the truth value R, though not known yes, is exactly either true or false. तो ठीक है, तो तीनों में P, Q, R, these are atomic formulas, these are atoms, they can be denoted as prepositions. ठीक है, और इनका हम एक ट्रुथ वैल्यू निकाल सकते हैं, ट्रुथ फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द statement. All right. At this stage, it may be noted that one symbols are used in place of given statements in say English. Then the propositional system and in general a symbolic system is aware only of symbolic representations and the associated truth values. The system operates only on these representations and except for possible final translation is not aware of original statements generally given in natural language, say English. ठीक है, we can build from atoms more complex propositions called as compound प्रपोजिशंस. ठीक है, तो हम नोट कर सकते हैं, ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि प्रपोजिशन सिस्टम को हम एक सिंबॉलिक वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम उससे ट्रुथ वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं कि वेदर दिस कैन बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो जो सिस्टम है आपका प्रपोजिशनल लॉजिक का वो इन्हीं सिस्टम इसी चीज़ पे रन करता होता है. ठीक है, except for such propositions are sun rises in the east and the clear is sky is clear. और सेकंड है if it is hot then it shall rain. ठीक है, तो इस तरह के इन्फर्ड सेंटेंसेस जो होते हैं उनको यूज करने के लिए हमें लॉजिकल कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है. वो क्या करते हैं, वो एटम्स को कनेक्ट करते हैं, वो आपके प्रपोजिशनल सिंबल्स को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड, let us see. The logical connectives in the above two prepositions are and if then. In propositional logic, 5 logical connectors are connectives. Not, and, if then, if and only if are used. These 5 logical connectives can be used to build compound propositions from given atomic formula. More generally, they can be used to construct more if complicated compound propositions from compound propositions by applying the connectives repeatedly. तो आपका एक और है, सॉरी, यहाँ पे देखिए एक नॉट है, एंड है, और है, ये सिंबल हो गया इफ देन का, एंड ये हो गया इफ एंड ओनली इफ का. तो ये आपके 5 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या कनेक्टिव्स हैं जो कि आपके एटम्स को कनेक्ट करते हैं. एटम्स आपके क्या हैं, P और Q हैं. ठीक है, फिर क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ ईच ऑफ द letters PQC is used as a symbol for the corresponding statement as follows. जैसे कि मान के चलिए P है the wind speed is high, Q है temperature is low और C है one feels comfortable. तो आप अगर सेंटेंस आप इन तीनों एटम्स को यूज करके बनाते हैं तो कुछ ऐसा बन सकता है, इफ द विंड स्पीड इज हाई एंड द टेम्परेचर इज लो देन वन
does not feel comfortable. ठीक है, ये समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कम्स इन योर एग्जाम वेरी 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 ऑफन. ठीक है, तो समझिएगा कि लॉजिक कनेक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं. ये आपका सेंटेंस है, इसको आपको लॉजिक कनेक्टिव एक लॉजिक कनेक्टिविटी आपको इसको देनी है. तो आप क्या लिखेंगे कि P and Q infer to not C. क्यों ये लिखा इन्होंने? क्योंकि P क्या डिनोट कर रहा था? द विंड स्पीड इज हाई. इफ द विंड स्पीड इज हाई, एंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एंड को हम देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे देखिए एंड, यहाँ पे ये जो एंड है हमने यहाँ पे यहाँ से ही ले लिया. हमें पता है कि द विंड स्पीड इज हाई को P से डिनोट करना है, हमने कर दिया. एंड को क्या किया? एंड वी नो कि एंड हम इस कनेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, कर दिया. फिर Q का मतलब क्या है? टेम्परेचर इज लो, एंड द टेम्परेचर इज लो, तो हमने Q लिख दिया. ठीक है, देन तो यहाँ पे देन क्यों आया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इफ एंड देन की. ठीक है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड देखिएगा, इफ भी है आपका और देन भी है. तो फिर आपने इफ और देन के लिए यहाँ पे इम्प्लाई किया सिंबल को. ठीक है, वन डज नॉट फील कंफर्टेबल, लेकिन आपने सी जो है क्या है? सी कह रहा है वन फील्स कंफर्टेबल. तो वन फील्स कंफर्टेबल का निगेशन मतलब कि ऑपोजिट क्या होगा? नॉट. नॉट ये देखिए, ये नॉट सिंबल है. ठीक है, नॉट, not C. How many of you understood this formula? किसी को दिक्कत है इस फॉर्मूले में? नो मैम. ठीक है. Thus, a compound proposition can express a complex idea in propositional logic. An expression that represent a proposition such as P or a compound proposition such as P and Q infer to not C is called as well-formed formula. So, whenever we use logical connectives along with the atom, it is called as well-formed formula, and they can be formulated only for those statements who are propositional. They could be either true or false in some certain situation, but they cannot be fuzzy, they cannot be unclear. All right, they cannot be a question, they cannot be some exclamation kind of thoughts. Okay, so थोड़ा सा और समझते हैं इसी चीज़ को. ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व करके देखिएगा कि आप कितने कनेक्टिव्स और कितने प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस को आप लगा पा रहे हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर exams. Logic is the analysis of appraisals of argument. An argument is a set of statements consisting of infinite number of premises and assumed statements and a conclusion. ठीक है, a valid argument is the one in which we would contradictory for a premises to be true but conclusion is false. तो समझिएगा कि सबसे पहली चीज कि आर्ग्यूमेंट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रेमिसेस. कि आपके पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ प्रेमिसेस हैं जिस जो कि या तो स्टेटमेंट्स होंगे या कंक्लूजन होंगे. ठीक है, उसमें से वैलिड आर्ग्यूमेंट वो होगा विच वुड बी कॉन्ट्रडिक्टरी फॉर द प्रेमिसेस टू बी ट्रू बट द कंक्लूजन टू बी फॉल्स. एग्जाम्पल देखते हैं कि what does it mean to say in logical studies we are interested in valid arguments. ठीक है, तो हम we are looking for valid argument. Let us see what is valid argument. If you overslept you will be late. ठीक है, this is the first premise. Then other is you are not late. The second premise, you did not oversleep. ठीक है, तो this is an invalid argument. All right, why this is invalid argument? Because despite not having overslept one may be late because of some other engagements or some other laziness. ठीक है, तो you cannot say that you did not oversleep. okay, तो अगर आप लेट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर आप ज़्यादा सो रहे हैं तभी आप लेट होंगे, और अगर आप लेट नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ज़्यादा ही सो लिया होगा तभी आप लेट हैं. कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. अनदर invalid argument is if we are close to the top of Mount Everest then we have magnificent view. We are having a magnificent view, therefore we are near to the top mountain. तो आप ज़रूरी नहीं है अगर आप माउंट एवरेस्ट के पास हैं तभी आपको अच्छा व्यू मिलेगा.
ज़रूरी नहीं है. This is invalid argument because we may have a magnificent view even if we are not close to the top of Mount Everest. कहीं पे भी मिल सकता है. तो these two claims are, you know, invalid. ऑलराइट. तो किस तरीके से एस्टैब्लिश करें एक लॉजिकल वैलिडिटी को या इनवैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इनवैलिडिटी ऑफ सम आर्ग्यूमेंट्स बट इनवैलिडिटी अबव वाज based on our intuition. However, intuition may also lead to incorrect conclusion. To be sure about the validity of the argument, we need some formal method. In section 1.5, we discuss how a truth table can be used to establish the validity or invalidity of an argument. ठीक है. तो किस तरीके से हम वैलिडिटी या इनवैलिडिटी को कर सकते हैं. साउंड आर्ग्यूमेंट. We will note that in the case of valid argument, it is not required that the premises or assumed statement must be true. The assumptions may not be true, but still argument may be valid. For example, following argument is valid, but the premises and conclusion both are false. तो अभी एक sound argument क्या होता है ये देखते हैं. If moon is made of a green cheese, okay? If moon is made of green cheese, then 2 plus 2 is 5, okay? That has no logic. Moon is made of a green cheese. ठीक है. तो premise 1, premise 2, by applying modern ponens, we conclude that it's a valid argument. ठीक है. हम ये कह सकते हैं valid argument, but 2 plus 2 is not 5. So we can say that this is not universally correct. So this argument is problem में basically in order to solve problems of everyday life, we need generally to restrict to only two premises and valid arguments. Then such an argument is called as sound argument. ठीक है. तो जब दोनों premises true होंगे, this one is false, this one is also logically it's true, but the fact is wrong. So भले ही दोनों प्रेमाइज ट्रू होंगे लेकिन अगर वो लॉजिकली ट्रू नहीं होंगे तो दिस इज नॉट कॉल्ड एज साउंड आर्ग्यूमेंट. ठीक है. साउंड आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट इज वैलिड एंड हैज ट्रू premises. ठीक है. इफ यू आर रीडिंग दिस देन यू आर नॉट illiterate. ठीक है. यू आर रीडिंग दिस, you are not illiterate. ठीक. That means you're reading this, that is true, so you're not illiterate. That is also a sound conclusion. ठीक है. ठीक. Example of valid but not sound argument with correct conclusion. If moon is made of green cheese, then 2 plus 2 is equal to 4. All right. So हम ये कह सकते द आर्ग्यूमेंट इज नॉट साउंड बट द कंक्लूजन इज करेक्ट. ठीक है. आप ये नहीं कह सकते कि मून है वो ग्रीन चीज का बना होगा लेकिन जो कंक्लूजन है दैट इज ट्रू कि 2 plus 2 तो 4 है इवन दो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. मून इज मेड ऑफ अ ग्रीन चीज which is a false premise. To conclude 2 plus 2 is equal to 4 correct makes sense. तो ये हम ये कह सकते हैं कि साउंड आर्ग्यूमेंट नहीं है बट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है. ठीक है. इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इफ यू हैव ओवरस्लेप्ट यू आर लेट. ठीक है. यू आर लेट देयरफॉर यू ओवरस्लेप्ट. इफ यू आर इन दिल्ली यू आर इन इंडिया, यू आर इन इंडिया देयरफॉर यू आर इन दिल्ली. ठीक है. इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है दो कंक्लूजन में भी ट्रू. जो कंक्लूजन है आपका वो ट्रू है बट द आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड. ठीक है. अब क्या है. अब आपके कुछ है नॉन लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है. वन ऑफ द रीजन व्हाई स्पेशल सिंबल्स are used in symbolic logic instead of corresponding natural language words. ठीक है. तो जो हमारे natural symbols हैं हमने इसके बारे में अभी डिस्कस किया. If and only if that is the word may have different meaning in different context. ठीक है. For example, the use of word in one sentences has different contention or meaning for the use in other following. ठीक है. Wait for 5 minutes. I am just back. Wait for 5 minutes.
Okay, sorry. Okay, so let us resume with these logical operators. One of the reason why special symbols, these and, or, not, double connective, and inference are used in symbol logic instead of corresponding natural language words. Uh, and or not, if then, if and only if is the word may have different meaning in different contexts. For example, the use of word and in one sentences has different connotation or meaning for use in others. In the following, Ram and Mohan are good hockey players. The statement can be equally broken into two statements. Okay, we can write as Ram is a good hockey player, Mohan is a good hockey player. So Ram and Mohan are good friends. Though the word and joins two words Ram and Mohan, but cannot be equivalently broken into two statements. ठीक है, हम ये इसको ऐसा लिख सकते हैं कि Ram is a good friend and Mohan is a good friend, but we cannot write it as Ram is a friend or Mohan is a friend. Mohan drove a car to reach home, met an accident, and got slightly injured. Here, the use of word and is not in the logical sense, but it is in temporal sense of and then, because the statement 3 has different sense from the given statement in 4. ओके तो अब किस तरीके से होगा कि मोहन met an accident, got slightly injured, and drove a car to reach home. Thus, from the above statements, it can be seen that the natural language word and many have many senses, both logical and non logical. Similarly, the words sincere and because are frequently used in arguments to establish some facts. But as shown from the following two arguments, their use in logical argument is risky in the sense that some of the arguments involving any of these words may lead to incorrect conclusions. ठीक है, argument one क्या है? Using the word because we get correct conclusion from two statements. Take Dr. Manmohan Singh was a Prime Minister of India in the year 2006. That is a true statement. ठीक है, Congress Party and its allies commanded majority of Indian Parliament in the year 2006. It is a true statement. So we can say that B is because of Q. So what is going to happen here? By using the connective because we get a correct or true conclusion from two true statements. तो हमें क्या होता है कि करेक्ट कंक्लूजन निकाल आता है जब भी हम because यूज करते हैं. In the following, using a word because we get incorrect or false conclusion from true statements, Dr. Manmohan Singh was Prime Minister of India in the year 2006. Cherrapunji, a town in northeast India, received maximum average rainfall in the world during 1901 to 2000. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है. However, to say P because of R, that is to say, Dr. Manmohan Singh was Prime Minister of India in 2006 because Cherrapunji, a town in northeast India, received maximum average rainfall in the world during 901 to 2 is at least incorrect if not ludicrous. Thus, from the two statements P and R by using connective because it is the case, the conclusion is incorrect. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर पहला और दूसरा सही हो तो conclusion भी सही हो. Thus, by using the connective because, in one argument we get a correct conclusion from two true statements, true statements, and on the other hand, we get an incorrect conclusion from true statements. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम अगर बिकॉज यूज कर रहे हैं तो इट कुड बी ट्रू, इट कुड नॉट बी ट्रू. ठीक है, सिंटैक्स ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक, अ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला और WFF or formula in short is the propositional logic is defined recursively as follows. An atom is a well formed formula. If A is a well formed formula, then negation of A is WFF. If A and B are well formed formula, then each of A and B, A or B, A, if B, if, if A, then B, if and only if B is a well formed formula.
Any well formed formula is obtained only by applying the above rule. तो above rule को अप्लाई करने पे ही आपको एक well formed formula मिलेगा. ठीक है. From the above recursive definition of the well formed formula, it is not difficult to see the expression. ठीक है. क्या होगा कि अगर हम एक रिकर्सिव डेफिनेशन लेते हैं वेल फॉर्म फॉर्मूला की, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट to see the expression if P then Q or not R. Logical connective with S is a well-formed formula because to begin with each PQ negation of R and S by definition is a well-formed formula. Then recursive application, the expression this is a well-formed formula again by another recursive application of expression this is a well-formed formula. So finally we can say that this is a well-formed formula. Further, it is easy to say that according to the recursive definition of well-formed formula, each of the expression if P then Q negation of something and P Q or R is not a well-formed formula. Okay, the reason is because you're not using the logical connectives here and you're not using the logical connective the proper items here. ठीक है, यहाँ पे भी एक एटम होना चाहिए और यहाँ पे भी आपको लॉजिकल कनेक्टिविटी देनी चाहिए, तभी ये एक वेल फॉर्म फॉर्मूला होगा. तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, यू हैव टू कीप दीज 4 थिंग्स इनटू योर माइंड कि ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो एक वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला होगा. फ्रॉम वेरी जब भी आप स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसी भी फॉर्मूले में, तो आप ऐसे ही करेंगे. फॉर सम पेयर्स ऑफ parentheses may be dropped for simplification. For example, A or B if if then B respectively may be used instead of giving well formed formula A or B and A if A then B respectively. We can omit the use of parentheses by assigning priorities in increasing order to the connective as follows. Thus, this connective has a least priority and negation has a highest priority. Further, in the expression, there are no parentheses and two connectives between the three atomic formula are used. Then the operator with higher priority will be applied first and then the other operator are going to be applied later on. So let us take one example and understand how to resolve. This is also very important. Okay, let us be given the well formed formula if P then Q and negation of R without parentheses. Then among the operators appearing in well formed formula, the operator negation has a highest priority. Therefore, a negation of R is replaced by negation of R. ठीक है, तो क्या होगा कि if it was under the bracket, तो क्या होता है, negation of R किससे replace हो जाएगा, under the bracket. The equivalent expression becomes P infer to R and negation of R infer to Q negation and negation of R. Next, out of the two operators with if and only if and the operator and as a higher priority, क्योंकि हमने अभी देखा कि प्रायोरिटी वाइज जो हमारे ऑपरेटर्स हैं सबसे कम प्रायोरिटी नॉट की है, देन एंड है, देन और है, देन निगेशन, देन आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं इफ एंड इफ ओनली इफ एंड देन एंड देन इफ एंड ओनली इफ. ठीक है. नेक्स्ट, आउट ऑफ द टू ऑपरेटर्स, ठीक है, दिस इफ एंड देन and the operator and has higher priority. Therefore, by applying the parentheses appropriately, the new expression becomes this, something like this. ठीक है. तो जो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ब्रैकेट्स को वन बाय वन करके रिजॉल्व करेंगे. फाइनली ओनली वन ऑपरेटर इज लेफ्ट, hence the fully parenthesized expression becomes P P if only if Q and negation of R. तो सॉल्विंग पैटर्न आपका ऐसे होगा. ओके, ऑलराइट. सो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं. I'll meet you tomorrow and तब तक के आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस रिजॉल्व कीजिए कि किसी भी सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए उसको सिंबॉलिक वे में किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. तो जब आप
इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए नॉर्मल फॉर्म में या डीजेनरेटिव फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर नाउ लेट अस कीप इट हियर। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स टुमारो। Okay, so I think tomorrow. Okay, so I will meet you tomorrow at the same time at the 10 a.m. All right. Thank you, class. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Is there anything you want to ask? You may ask. Otherwise, I'm taking the leave.